Hi everyone, thank you very much for joining us at Startup Talks for another episode. We are joined today by Yahya from Dastgyr. He's the general manager looking after growth and recently introduced BNPL. So Yahya, thank you very much for coming on to Startup Talks. How are you doing? Thanks a lot for having me, Timur. I'm good. Uh, I'm doing well. How are you doing? I'm very well, thank you. तो या क्या हो रहा है दस्तगीर में बड़े बहुत सारे प्लेयर्स काम कर रहे हैं, बाज़ार भी है, दस्तगीर भी है, ताजिर भी है, रिटेलो भी है। तो कहाँ जा रही है ये मार्केट बी टू बी कॉमर्स की? बिल्कुल, बिल्कुल. So it's a huge market. या बहुत बड़ी market है. I think there are multiple players trying to solve multiple different problems from multiple different angles actually. So I think ये एंड चल रहा है. अच्छा, सो वेयर डज दस्तगीर स्टैंड अमंग देम? So I बिकॉज think all of them launched काफी ज्यादा. around the same time, I think. तो yeah, I think almost the same, but like थोड़ा सा difference है. Mm-hmm. Generally, I think trying to at Dastgyr, I think I can talk more about Dastgyr Yes, yes. since I'm closest to that information. So Dastgyr, we're basically aiming to empower the SMEs. Mm-hmm. तो अगर प्रॉब्लम को मैं ब्रेक डाउन करके आपको बताऊं जो हम सॉल्व करना चाह रहे Mm-hmm. हैं इज के there's at one side there's the retailers जो कि Yeah. किराना स्टोर्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम रिटेलर्स हैं जो Mm-hmm. कि घरों में लोग उनसे सामान खरीदते हैं. Mm-hmm. उनको इन्वेंट्री का मसला आता है प्रोक्योर करने में. इट्स हार्ड फॉर देम टू प्रोक्योर द इन्वेंट्री, Mm-hmm. get it delivered and find the inventory at better prices, right? Yeah. और देन तीसरा मसला है उनका कि उनको ये चीज क्रेडिट पे भी नहीं मिलती. तो ये Mm-hmm. तो होगी रिटेलर साइड की प्रॉब्लम कि प्राइस भी अच्छी नहीं मिल रही, Right. डिलीवरी भी नहीं मिल रही और उधार भी नहीं मिल रहा. Right. So it's a difficult situation to be in, especially in the lockdowns and even without the lockdowns. Mm-hmm. Generally, these three problems prevail. Then Mm-hmm. there's a problem of the manufacturers. So Mm-hmm. manufacturers की problem ये है कि small and medium manufacturers, even large manufacturers, the distribution का जो system है और Mm-hmm. जो उनका तरीका है दुकान तक अपना सामान पहुंचाने का, Mm-hmm. वो इतना पुराना है और इतना fragmented और इतना inefficient है that the manufacturers it's a really big trouble for the manufacturers के यार हमें मैन्युफैक्चर तो करना आता है, एक्सपर्टीज तो हमारी मैन्युफैक्चर करने में है, बट इसको बेचना कैसे है. So Mm-hmm. there is no such launch pad existed in this digital world whereby a manufacturer could simply focus on their expertise, which is manufacturing. Mm-hmm. And even not just manufacturers, there are then distributors as well, जिनको मैनुअल लोग हायर करने पड़ते हैं ऑन द ग्राउंड, जो कि जाके बेचने के लिए the only tool they can use is manual human beings on Mm-hmm. the road, Mm-hmm. which is not the most efficient way to reach out to people, Yeah. especially with if there's rain, if there's different weather conditions, and there's a huge problem with like managing thousands of people on the road. Mm-hmm. तो मैन्युफैक्चरर साइड की प्रॉब्लम है कि मेरे से सामान बिक नहीं रहा और रिटेलर की साइड की प्रॉब्लम है कि मुझे सामान मिल नहीं रहा. So Right. basically, Dastgyr is a platform that empowers all of these stakeholders to Mm-hmm. sort of get connected with each other. So we connect the suppliers, whether they be the manufacturers or distributors, with the retailers. Mm-hmm. So in order to solve for both their problems. Okay. So, which cities are you concentrating in right now? Is it Lahore or I saw some adverts for you're seeking resources for Karachi as well. Are you just expanding into Karachi now? Yeah. No, no. So we started simultaneously in both cities, Okay. Karachi and Lahore last year. All right. So we operate in Karachi and Lahore right now. Okay. Or how does this model work? I mean, do you only stick to uh, just Kirana stores, retailers, and distributors, or do you have arrangements with manufacturers too? Yeah. So a supplier, like I said before, could be anyone. We've got manufacturers on our platform, Mm-hmm. small scale manufacturers, medium scale manufacturers across all different categories. Like for example, confectionery के हैं, Mm-hmm. staples में there's atta, chawal, dal, stuff Mm-hmm. like that, oil and ghee. Mm-hmm. Uh, so yeah, so it's a mix of both. All right. अच्छा,
Dastgyr, I believe, is the first one to come up with the BNPL model for small retailers, right? Nobody else is doing it. I know some other fintechs are doing it, like Finja and all. They're also catering, but uh, they're not providing them with the goods that retailers need to sell. So, बिल्कुल. what's the story behind this BNPL? Is it connected to the funding as well raised last month and the month before, or was this in plans from before? So it was always on the cards. It was in plans. Basically, हुआ कुछ इस तरह के when we started serving these retailers, actually, Mhm. back so learning बहुत ज़्यादा तेजी से हो रही होती है in as you scale super fast that so it very soon became very evident to us जब हमने पहले लगता था कि प्रॉब्लम है डिलीवरी का और सामान का Mhm. और जब सामान देना शुरू किया और डिलीवरी देनी शुरू की तो समझ आई कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनको क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना मुश्किल है कि सैलरी स्लिप और बैंक सर्टिफिकेट्स और इस तरह की चीजें रिक्वायर्ड हैं फॉर देम टू गेट क्रेडिट एंड Mhm. देन क्रेडिट अगर मिल भी जाए किसी तरह से पहले तो वो मसला था Mhm. दूसरा प्रॉब्लम इज कि जनरली इस्लामिक फाइनेंस इज द मोस्ट प्रेफर्ड mode of finance for Yeah. generally everyone in Pakistan and especially the retailers. Mhm. What we हमने फीडबैक जो लिया वो यही मिला कि यार ये शरिया कंप्लाइंट वे ऑफ फाइनेंसिंग अगर कोई मिलेगा तो हम लेंगे वैसे तो जनरली लोग इनफॉर्मल उधार भी देते हैं बट दोज आर इंसेनली हाई मार्कअप रेट्स एंड देन यू नो Mhm. पीपल डोंट वांट टू गेट इनटू दैट तो देन वी उस तरह से फिर हमारे माइंड में आया कि वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम this Mhm. is a very critical element of this problem so then we started thinking about it and then we iterated so now we've finally decided to go in full throttle after the planning has been done. Ach. So you are cutting off the loan sharks from in between because all these small retailer markets, like even in you go to Jodia Bazaar in Karachi, you've got invisible loan sharks Yeah, lurking about, and they have been running the markets for decades. So उसका बैकलैश कुछ ना कुछ तो होगा, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, लेकिन हो सकता है. अच्छा, तो what kind of user base do you have in comparison to the other players in the market? Because usually there's a piece of cake. I mean, everybody has a certain percentage of that piece of cake. so I think user base तो technically similar ही होगी Mm-hmm. FMCG retailers हैं Mm-hmm. अगर numbers की कुछ बात करूं तो 2 मिलियन 20 लाख retailers हैं पाकिस्तान में Mm-hmm. और एड्रेसेबल मार्केट इज सो ह्यूज और तकरीबन 120 बिलियन का डॉलर्स का एनुअलाइज स्पेंड होता है ये एफएमसीजी किराना ग्रोसरी पे All right. तो अभी तो आई थिंक अगर सिमिलर मार्केट्स की बात करें तो इंडिया है Mm-hmm. इंडिया में आई थिंक पाकिस्तान में आपने अभी जो मेंशन की कंपनीज के नाम आई थिंक ये 4 से 5 हैं Mm-hmm. और इंडिया में देर आर 10 कंपनीज हम पाकिस्तान में जितने भी प्लेयर्स हैं इन सबसे ईच ऑफ देम इज एटलीस्ट 5 times बिगर Mm-hmm. and they still haven't been able to capture even like more than 1% of the market. Mm-hmm. So market बहुत बड़ी है. I think the ecosystem in general का बहुत ज़्यादा फायदा है. I think अभी तो we're very very early in the game. Yes, तो absolutely. customer सबके तकरीबन same है. Mm-hmm. Mostly इस तरह से. सही है. नहीं, वो it's good for competition too. Eventually down the road there will be some mergers and acquisitions. Somebody will merge with somebody and somebody will take the lead. That's how businesses work. So yeah, yeah. What's the work culture like at Dastagir? Because bazaar and all, they really emphasize on their work culture. They talk about it openly on social media too. How's it like at Dastagir? I think we're trying to we're in the process, but हम कोशिश यही है कि it should be a great culture. I think startups coming in new are actually bringing in a wave of really good cultures, which is very outcome driven. Mm-hmm. So we like to believe, we like to think of ourselves as one closely knit family, which is super mission driven and Mm-hmm.
super objective driven to achieve the goals. So basically, it all starts from the process of recruitment, jahan par we're actually everyone on the team, like everyone on the core team, is spending like hours, multiple hours every day to sort of make sure that whoever is coming in. So basically, it's not like we're never looking for employees. We're always looking for teammates to join the mission. In the sense that we have to look at this from multiple angles. In the sense that the person coming in the organization, is Dastgyr the right place for him or her to be? In the sense कि उनके long term और short term goals से ये चीज align करती है या नहीं? Is the person completely sold on the vision? Will Dastgyr be able to do justice to the person coming in? Is it the right point in time for somebody to join the mission? तो वो वाली सारी चीजें रिक्रूटमेंट में बहुत ज्यादा केयरफुली इस चीज को देखा जाता है, ताकि we're building the right culture from the get go. उसके बाद there's a lot of attention given to the onboarding process. The onboarding process is like इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी लोग नए आ रहे हैं और जिस तरह से तेजी से कंपनी ग्रो कर रही है, बहुत जरूरी है कि उनको कंपनी की पूरी वैल्यूज और टीम की पूरी वैल्यूज बताई जाएं. एंड देन everybody, it's like a very flat hierarchy where everyone needs to be taking initiatives. Everyone is free to do whatever they want and just keep the company first. So these are some of the things that we're trying to do in order to make the culture better. Sahi. Acha, coming back to BNPL, you were talking about Sharia compliance. Yeah. And obviously it's going to be interest free for some time. Does it work on the same model as KistPay is doing with its consumer finance, or is there something different to it? Because ये आपका और आपके फॉलोअर्स भी देखेंगे, हो सकता है आपके रिटेलर्स भी देखें जो आपसे एसोसिएटेड हों या जुड़ना चाहते हों, तो उनके बेनिफिट के लिए कुछ डिटेल बताएंगे उसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सो मैं आई वुडंट बी एबल टू कमेंट ऑन किस पे, मुझे उनका मॉडल एग्जैक्टली नहीं पता बैक एंड पे क्या चलता है. मैं बता देता हूँ. वो you've got like 4 installments. They're all interest free installments, and then obviously when you can't make the payments, right, if you delay them, there's a certain fee, that kind of stuff. Right. So मैं explain करता हूँ about how we do it. Yeah. So basically, since Dastgyr is a marketplace for suppliers and retailers to connect, we are also a marketplace for lending partners to connect. So for example, जैसे आपने mention किया, there is Finja, there is Muawin, and then there's multiple other players and partners जो कि हमारे साथ platform पे they can just come in and say कि we want to basically help with the credit sales. How it works is कि let's say एक lending partner है, पार्टनर ABC whatever, वो आके कहते हैं, तो होता है इस तरह. हाउ इट इज शरिया कंप्लाइंट इज के आप आगे रिटेलर हैं और आपने हमारी ऐप पर देखा कि एक आटे का बैग है 20 kg and it's for let's say 2000 rupees, and now you want to buy it for 2000 rupees. What will happen is if you'll get 2 options. You'll see के I want to buy it on cash, so it's 2000 रुपए. And maybe if you want to buy it on credit, it's थोड़ी सी ज़्यादा price, whatever the lending partner wants to sell you at. तो होता क्या है कि जब आप उधार पे लिखते हैं, आप कहते हैं हाँ मैंने ये आटे की बैग को उधार पे खरीदना है, तो वो आपको बताते हैं, वहाँ पे एक स्क्रीन पॉपअप आएगी और आपको बताएगी कि अच्छा तो हो ये रहा है कि ये जो लेंडिंग पार्टनर है ABC, दस्तगीर से जो दस्तगीर की ऐप पे कैश की प्राइस है, ये उस पे दस्तगीर से खरीद रहा है और ये खरीद के आपको इतने का बेच रहा है, और ये फिर आपसे 30 दिनों में या 50 दिनों में या व्हाटएवर द टर्म्स आर, उतनी देर में आपसे क्रेडिट वापस कर लेगा. तो क्या ये आपको डील पसंद है? होता ये है कि सो वी ट्राई बेसिकली बैक एंड पे हमने कोशिश करनी होती है कि ये प्राइस क्रेडिट पे भी रिटेलर के लिए उससे सस्ती हो जिससे उसको पहले मार्केट से मिल रही थी. तो बेसिकली यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली शरिया कंप्लाइंट. Somebody is buying it from Dastgyr and I am buying it from them, and my agreement is with the lending partner. Retailer का agreement है lending partner से कि
ये वो 30 दिनों में उसको पैसे वापस कर देगा। तो Right. यहाँ तक तो होगी ये वाली बात। फिर आपकी वो लास्ट वाली बात कि 30 दिनों में इफ द पर्सन इज अनएबल टू पे फॉर Mm-hmm. सम रीजन, तो द फी बेसिकली उसकी फिर वो अग्रीमेंट होती है, उसका प्रूफ होता है जो लेंडिंग पार्टनर ने दिखाना होता है कि Mm-hmm. जो वो फी लगेगी, एक तो वो वन टाइम फी होगी और वो किसी एक एक डिक्लेयर्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को जाती है जिसका कोई स्टेक इन्वॉल्व नहीं होता, Mm-hmm. दस्तगीर का, उस रिटेलर का या फिर लेंडिंग पार्टनर। Okay. तो इंटायरली ऐसे ये वर्क करता है। Say, so since Dastgyr is not lending directly, they are partnering with other organizations to lend to हम्म। retailers to stock up. So, how does the credit worthiness check come in? Is that Dastgyr's responsibility or the lending partners? So the lending partner, the lending partners, they do the due diligence Mm-hmm. on the customer, and then Mm-hmm. it's entirely the onus is entirely on lending partner. But in the past few months, what we've experienced is that I think the non-performing loan percentage has been zero. Uh, these retailers, like these were so underserved, and Mm-hmm. तो इसकी थोड़ी क्वालिटेटिव ये फैक्ट है, आपको यहाँ मेंशन करता हूँ। तो होता ही है कि बेसिकली व्हेन वी चेक कि यार इसमें रिस्क क्या होगा, तो इट्स एक्चुअली सो रिस्क फ्री इन द सेंस के दीज रिटेलर्स या तो उन्होंने अपने घर की एक विंडो में एक स्टोर खोला होता है, या Mm-hmm. उन्होंने अपने घर के करीब एक मार्केट में स्टोर खोला होता Mm-hmm. है। एंड देन क्योंकि उनको सामान देने के लिए कोई पहले विलिंग ही नहीं था क्रेडिट के ऊपर, एक तो देर सुपर ग्रेटफुल फॉर दिस सर्विस, एंड देन जब वंस दे डू गेट इट, तो उन ये जो, क्योंकि फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम फ्रॉम द सेगमेंट, ये जिस सेगमेंट का हिस्सा होते हैं सब लोग जो प्रेफर करते हैं कि हलाल इनकम कमाने के लिए मेहनत करके स्टोर खोल लें, Mm-hmm. दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर सेल्फ एस्टीम एंड इंटेग्रिटी इन द सराउंडिंग्स, क्योंकि काफी क्लोजली नेट कम्युनिटी होती है, हम सायों से और साथ वाली दुकानों से उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो Mm-hmm. वी एक्सपीरियंस दैट दीज पीपल ट्राई टू पे ऑफ अर्ली, एंड Mm-hmm. देन दे नेवर, क्योंकि वो उनको लगता है कि ये इंटेग्रिटी की बात है कि कोई हमसे आके पैसे हमने किसी के लिए में तो उसको टाइम पे वापस करने। Right. तो दैट्स अ रियली ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। Right. Now, uh, coming to user experience, that's your forte for the retailers. What message do you have? Obviously, BNPL is integrated with the application, right? What message do you have for your retailers? What आप उनके लिए मतलब क्या facilitate करना चाहेंगे? हो सकता है इस ये वीडियो जो है हो सकता है वो भी देखें बिल्कुल बिल्कुल they might want to come on to over to Dastagir. बिल्कुल, absolutely. So, we always try to stay very, very close to our customers. Everyone on the team has multiple customers on their speed dial. We try to, क्योंकि we're a product-led company, technology के through हम retailers का ही मसला solve करना चाह रहे हैं। तो Mm-hmm. I think, firstly, we're super grateful to the retailer community for putting their trust in us and helping us improve. Mm-hmm. And then ये भी बहुत खुशी होती है कि people who have never used a smartphone Mm-hmm. are now running their entire livelihood based on a smartphone based application. So we Absolutely. so I'd like to encourage everyone to sort of start taking the plunge, and जितनी ज़्यादा इस चीज़ को बनाएंगे सेल्फ एम्पावरमेंट की वजह से, they are not dependent on anyone then. Mm-hmm. तो it's beneficial for everyone, it's beneficial for the economy of Pakistan. तो Mm-hmm. uh, really grateful to the retailer community, or really looking forward to be able to serve everyone of our customer base in a better way every day. Chale, great. We are almost coming to the end of time. Yahya, is there any message that you'd like to add for the startup community, the ecosystem? Yeah, I think Pakistan is on a great trajectory. So Mm-hmm. आपने जैसा mention किया, बहुत अच्छी बात है. It's really good to know कि people are reaching out to people of great experience like yourself No, for thank you. mentoring and advice. So I think we we all as a part of the community, Pakistani community, and also as a part of the startup community,
we have a responsibility on ourselves ke, we need to be volunteering, we need to be empowering more and more entrepreneurs to take the plunge and help them basically. क्योंकि काफी सारी लर्निंग्स होती हैं हमारी, एक साल में काफी सारी लर्निंग्स होंगी, जिसकी वजह से आप काफी सारी चीजें मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो अगर किसी को बता दो. तो आई एनकरेज एवरीवन टू सॉर्ट ऑफ यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक, जिस तरह आपने स्टार्टअप टॉक्स के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एंड देयर इज लिंक्डइन, देयर इज व्हाट्सएप, देयर इज फेसबुक. तो कहीं से भी अगर किसी का पता चलता है एंड somebody wants to do something, if they have an idea, आई थिंक एक मैसेज जो स्टार्टअप कम्युनिटी को होगा कि आइडियाज होते हैं 99.9 होती है एक्सक्यूशन, डूइंग इट द राइट वे. तो Right. बहुत जरूरी है दैट everyone should feel free to reach out to people who've done it before, and like anyone from Dastgyr would be happy to help anyone who's taking the plunge and doing something new. So we'd be happy to help. Chale, Feel free to reach out. that's good to know. So we'll call it a day here then, Yahya. Thank you very much for being on Startup Talks. और Thanks a lot for having me. no, no, it's my pleasure.